Assalamu alaikum viewers, I'm here with another video on the series for Psychology MCQs. So we will be going over 5 different MCQs that I have prepared for you all. We will be discussing their answers in detail as well. So let's start. First question is, delusion refers to option A, thoughts or beliefs that have no basis in reality. Option B, feelings that have no basis in reality. And option C, behaviors that have no basis in reality. Option D is none of the above. So first off, हम लोग delusion को समझेंगे कि वो क्या होता है. So as most of you must have read during your psychology course, that delusion is basically a false belief. अगर हम उसको बहुत ही simple terms में बात करें, ये चीज जो आपके माइंड में होगी तो डेफिनेटली आपका जहन ऑप्शन ए के ऊपर जाएगा. व्हाई नॉट ऑप्शन बी एंड सी? बिकॉज थॉट्स जो है वो ही जनरेट करती हैं हमारे किसी भी बिहेवियर को और किसी भी फीलिंग को. सो इट ऑल स्टार्ट्स इन द माइंड. यू नो हाउ इट गोज कि जी इट्स ऑल इन द माइंड. इट इज ट्रू बिकॉज पहले एक थॉट जर्मिनेट होती है, वो ही हमारे किसी भी अमल को या हमारे किसी भी एहसास को जो है वो उभारती है. So that's a very clear answer, and it says thoughts or beliefs that have no basis in reality. So basically आप अब कहेंगे कि thoughts से beliefs में क्या difference है. तो अगर मैं बहुत short करके बताऊं तो beliefs हमारे कुछ इस तरह के बहुत ही strong held और बड़े rigid किस्म के ही thoughts होती हैं. ठीक है, beliefs are types of thoughts but they are very deeply ingrained. ठीक है, जैसे कुछ चीजें होती हैं बहुत ज्यादा कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, सोशली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, तो वो चीजें चेंज करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. So development psychologists believe that there are two factors that influence human development. Number one is motivation and emotion. Option B is self and others. Option C is genetic makeup and experience. And option D is reward and punishment. So motivation and emotion का इसमें बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है because developmental psychology के अंदर इन चीज़ों का जिक्र इतना ज़्यादा नहीं आता. ठीक है, हाँ ये वैसे आपकी पर्सनालिटी के ऊपर असरअंदाज ज़रूर होती हैं, लेकिन ये आपके मूड के ऊपर, बट दे नॉट as such linked to your developmental milestones या आपके जो एक developmental stages होते हैं. Self and others भी एक बहुत ही it's a very vague kind of an answer. इस आंसर में इतनी जान नहीं है. ठीक है, then option D, reward and punishment, we all know that this is very specifically related to the behavioral psychology है, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं reinforcement की और एक behavior को हमने encourage करना है या discourage करना. देखिए सारी चीजें हमारी जो है वो उस तरफ आ जाती हैं, जो कि हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली जो थियरी है उस पे ये ज्यादा हमें सूटेबल लग रही है. सो राइट नाउ ऑप्शन सी की तरफ हम जाएंगे, विच इज जेनेटिक मेकअप एंड एक्सपीरियंस. व्हाई? बिकॉज जब भी हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पढ़ना शुरू करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजी के अंदर एक डिलेमा या डिबेट है, नेचर वर्सेस नर्चर. सो दिस इज अबाउट दैट कि बेसिकली जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, द थिंग्स दैट वी आर बोर्न विद, जो हमारे डीएनए के अंदर है, जो हमारे क्रोमोसोम्स के थ्रू हमारा जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है सेल्स का, और आवर हेरिडिटरी जो हमारे ट्रेड्स हमने इनहेरिट किए हैं अपने एंसेस्टर्स से. सो ऑल ऑफ दैट इज नेचर, वी आर बोर्न विद इट. ठीक है, हमारी आंखों का कलर है, हमारी हाइट कितनी है, कितनी होगी, एंड द स्किन कलर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्री डिटर्मिन्ड. Then second part is nurture, which is the environment that we are brought up in, the family, the culture, the sort of किस माहौल में आप पले बड़े होते हो वो आप पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है. So this will be the right answer. Question number 3 is, according to Bandura, one is socialized by option A punishment, option B observation, option C environment, option D none of these. So punishment की जहां तक बात आती है, again that is very closely related to the operant conditioning model, तो उसको हम इस वक्त नहीं कंसिडर करेंगे. Then option C environment, शायद आपको लग रहा होगा कि ये भी बड़ा क्लोज हो सकता है, because Bandura talked about how the environmental factors influence human behavior. बट ये भी इतना ज्यादा कहते हैं ना कि मजे का जानदार आंसर नहीं, थोड़ा वेग आंसर है.
रिमेंबर एमसीक्यूज के अंदर आपके पास बहुत लिमिटेड आंसर्स हैं, ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपने बेस्ट सूटेड पिक करना है. सो टेक योर टाइम एंड ऑलवेज पिक अप द ऑप्शन व्हिच इज द मोस्ट परफेक्ट फिट. ऑप्शन डी को भी हम इग्नोर कर देते हैं. सो बी की तरफ हम जाएंगे. व्हाई? बिकॉज बंडूरा बेसिकली टॉक्ड अबाउट द सोशल लर्निंग थ्योरी. एंड सोशल लर्निंग थ्योरी मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज करके बताऊं तो वो क्या थी कि बेसिकली एक बोर्ड ऑल एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें देयर वाज दिस इन्फ्लेटेड डॉल जो कि कमरे में रख दी गई थी और साथ कुछ छोटे बच्चे थे उस कमरे में. बहुत आपको मैं सिंपलिस्टिक करके बताऊं. They saw a video of a woman who was hitting that doll और बाद में उन बच्चों ने भी उस डॉल को हिट किया. And that is how they learned that behavior through mere observation. So बंडूरा की सारी थ्योरी का क्रक्स ही ये था कि जी you learn by observing, which is actually very true and a very practical approach. All right, so now we move on to question number 4. A feeling of apprehension or tension is frustration, panic, anxiety or fear. हम इन चारों को बारी बारी स्टडी कर लेते हैं and then you can decide which option is most suited. देखें, फ्रस्ट्रेशन इंसान को कब होती है? फ्रस्ट्रेशन की एक बहुत बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है कि when your situation is not meeting the goals or demands or the expectations that you have set, ठीक है, या आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज इस वक्त नहीं है जो सिचुएशन आपसे डिमांड कर रही है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी. राइट? फॉर एग्जांपल यू स्टडी फॉर अ टेस्ट बट यू डोंट क्वालिफाई. तो जो टेस्ट की डिमांड थी आपके पास उस वक्त वो कैपेबिलिटी या एबिलिटी नहीं थी, यू डिडंट मीट इट एंड दैट्स व्हाई यू आर फ्रस्ट्रेटेड. या इस तरह की कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं. सो फ्रस्ट्रेशन इज दैट इज बेसिकली where your emotions and feelings are very heightened and they're very intense as compared to anxiety. So like we've studied and heard that panic disorders and panic attacks intense extreme level के होते हैं which can even land you in the emergency. So पैनिक और एंजाइटी में हम इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एंजाइटी एक इस तरह का आप कह लें कि जनरलाइज्ड एप्रीहेंशन होती है किसी चीज के बारे में जो आने वाले कल में होती है. दैट इज फ्यूचरिस्टिक एंड वी आर वेरी टेंस एंड वेरी अपसेट अबाउट इट which may not be very rational, right? Then fear एक ऐसी चीज है which is a very natural human emotion and it is also very essential for survival. ठीक है, अगर इंसान के अंदर किसी बुरी चीज का, किसी खतरनाक चीज का खौफ नहीं होगा तो वो अपने आप को बचा भी नहीं सकेगा उससे. ठीक है, इस तरह बच्चों में अक्सर फियर कुछ चीजों का, जैसे जिनका उन्हें नॉलेज नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल दे डोंट नो बिजली की चीज है तो वो उसमें हाथ भी देते हैं, लेकिन जब आप उनको समझा देते हो एंड दे डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग तो दे आर scared of it and that's how they can sort of protect themselves. So fear एक बहुत जरूरी और एक बहुत ही natural human emotion है. ठीक है, so that's how we can differentiate between these different categories. और a feeling of apprehension or tension का जो हमारे पास final answer आता है, that is basically yes, that's correct, anxiety. सो एंजाइटी की बहुत सारी टाइप्स हैं. लाइक जनरलाइज्ड एंजाइटी की बात भी हम करते हैं, फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज भी आ जाते हैं. पैनिक के बारे में भी ये बात आ जाती है. डीएसएम अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो you'll get to know all about this. Moving on to our fifth and the last question. The suggested cause of abnormal behavior from the cognitive perspective is faulty learning, early childhood experiences, unconscious unresolved conflicts, or faulty thinking. अब इसके अंदर हम वन बाय वन देख लेते हैं. फॉल्टी लर्निंग की जहां पर बात आती है तो डेफिनेटली द लर्निंग थ्योरीज का जिक्र आएगा जहां पे बिहेवियरल थ्योरीज भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगी. सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. देन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आपको पता है वो ज्यादातर साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर थे. So they will not be linked to the cognitive school of thought. Then unconscious unresolved conflicts का जिक्र भी ज्यादातर हमने सुना फ्रॉइडियन स्कूल ऑफ थॉट में या साइकोएनालिसिस में. So again, these two are part of another school of thought. Then we come to faulty thinking. अब cognition क्योंकि एक higher order thinking को कहा जाता है, तो इसी वजह से cognitive perspective के अंदर ये माना जाता है कि जो root cause होती है किसी भी abnormal behavior की, वो होती है हमारी thinking का problem, जिसको हम अक्सर जानते हैं जी cognitive biases से, या फिर जो हमारी होती है unhelpful thinking patterns, right? So this brings us to the final answer, which is faulty thinking. And that's about it for this video. Thanks for watching. Do subscribe to my channel for more such videos. Thank you and Allah Hafiz.